Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. Today our topic is VSEPR theory, and VSEPR theory is basically a very easy way for us to figure out molecular geometry. Now, why should we care about molecular geometry? It is because जितने भी molecules हैं उनका structure determine करता है उनकी properties को. उनके स्ट्रक्चर से डिपेंड करता है उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कैसी होंगी. इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डिटरमिन करेंगे कि उसकी डेंसिटी कैसी होगी, क्या वो सॉफ्ट होंगे, क्या वो हार्ड होंगे, क्या वो फ्लेक्सिबल होंगे, क्या वो रिजिड होंगे. एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी कैन फिगर आउट कि कौन सा मटेरियल कपड़े बनाने के लिए यूज़फुल है और कौन सा मटेरियल गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील बनाने के लिए यूज़फुल है. सो वट एवर यूज़ वी आर गोइंग टू पुट समथिंग टू इट डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर, और वो राइट एट द मोलिकुलर लेवल वो डिसाइड होता है कि वो कितनी यूज़फुल इन एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन चीज़ होगी. एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू नो अबाउट VSEPR theory. Now VSEPR theory is a very simplified version of this. इसमें ऑब्वियसली बहुत हमने सिंपलिस्टिक मॉडल बनाया हुआ है, तो इसकी वजह से एक्चुअल वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफर करती हैं, बट इट्स अ रियली रिमार्केबल थेरी क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी टफ चीज़ें प्रिडिक्ट करना आसान हो जाती हैं. फॉर्चुनेटली फॉर यू गाइज इन ए लेवल्स हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं. हम इसके रिलेटिविस्टिक इम्पैक्ट्स को नहीं देखेंगे, हम इसके लोन पेयर्स को हाउ दे अफेक्ट हाउ द रिपल्शन इज अफेक्टेड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द एटम उसको नहीं देखेंगे. हमने सिर्फ सिंपल सा VSEPR थ्योरी को देखना है. सो बिफोर वी डू दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि मॉलिक्यूल का 3D फार्मूला क्या होता है. हाउ डू वी शो अ मॉलिक्यूल ऑन पेपर. सो उसमें हमें ये देखना है कि मॉलिक्यूल 3 डायमेंशंस में जब होते हैं सो दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं. वन इज़ व्हाट वी कॉल प्लेनर मॉलिक्यूल. प्लेनर मॉलिक्यूल्स आर द वंस जिनमें कोई भी हाइट नहीं होती है, यानी कि वो एक प्लेन पर एग्जिस्ट करते हैं. उनकी सारी बॉन्ड्स एक ही सरफेस पे आ सकती हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी कि अगर हमारे पास कोई BF3 मॉलिक्यूल होता. अब BF3 में क्या होगा कि उसका अगर ये F इस तरह पड़ा हुआ है तो दूसरा F भी ऐसे पड़ा होगा और तीसरा F भी ऐसे पड़ा होगा. मैं कहना ये चाह रहा हूँ दैट देर ऑल इफ़ आई पुट देम ऑल ऑन अ टेबल then F, B and the other all the 3 Fs they will be on the same surface. They will not need to be at a higher level. हाइट पे नहीं होंगे. जैसे आपने डायमंड के स्ट्रक्चर में देखा होगा कि टेट्राहेड्रल होता है तो उसकी वजह से वहाँ पर एक हाइट का स्ट्रक्चर आ जाता है, लेकिन ग्रेफाइट में सब कुछ एक लेयर में होता है तो वो लेयर जो है उसमें हाइट नहीं होती. जस्ट लाइक दैट ये B और तीनों F जो हैं ये एक ही लेयर में आते हैं. वी कॉल दिस प्लेनर. अच्छा, अब प्लेनर मॉलिक्यूल्स में और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स में फ़र्क ये है कि नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल 3 डायमेंशंस में होता है, उसमें हाइट होती है. अच्छा, प्लेनर मॉलिक्यूल को भी शो करवाने के लिए हम उसको रोटेट तो कर सकते हैं. सो उसको शो करवाने के लिए कि वो किस तरह से वी हैव अ 3D फार्मूला. 3D फार्मूला बेसिकली वर्क्स ऑन दिस थिंग. यू कैन हैव अ डॉटेड लाइन, यू कैन हैव अ स्ट्रेट लाइन और यू कैन हैव अ वेज. ओके, द डॉटेड लाइन शोज इट इज़ बिहाइंड, okay, or inside. That's what it means, inside the paper or the screen what you're talking about. तो अगर मैं डॉटेड लाइन बनाता हूँ, लेट्स सपोज इसके साथ मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ, that shows that right now you're looking at a screen, but imagine if fluorine was behind the screen that you are looking at. Okay, similarly this flat line means in the same plane. So अगर ये हमारे पास जो B और F की बॉन्ड है दैट इज सॉलिड, दैट विल मीन ये इस स्क्रीन के ऊपर है, इस पेपर के ऊपर है. एंड द वेज मीन्स आउटसाइड ऑफ द प्लेन. ओके, आउटसाइड ऑफ द पेपर और इन फ्रंट ऑफ. सो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर ये एक वेज हो तो यू कैन इमेजिन दिस टू बी स्टिकिंग आउट ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन इमेजिन दिस विल लुक लाइक इन 3D. Alright, so B is in the middle, F is on the left side or right side or whatever. One F is behind it and one F is in the front. And इनके बीच में ये जो होता है इसको बोलते हैं bond angle. Okay, and bond angle determines how compact a molecule is going to be and how strong a molecule is going to be. Similarly, this one is called bond length. Bond length is how far away are the two nuclei that are holding on to these shared pairs of electrons, because every covalent bond is shared pairs of electrons. So bond length tells us how far they are
and bond angle tells us one bond how far it is from the other bond in terms of the angle. अगर वो बहुत करीब होंगी उनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी कि मॉलिक्यूल के टूटने का चांस ज़्यादा है, और अगर वो दूर होंगी तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्प्रेड अराउंड है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को इतने ज़्यादा रिपेल नहीं कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी थोड़ी सी उससे इम्पैक्ट होती है. राइट, सो दैट्स हाउ वेस्पर थ्योरी will start. Now, once you talk about this thing, so there is something that I have added on this personally, and that's something that I call CDR. CDR is charge dense region. So whenever you look at any molecule, आप उसका स्ट्रक्चर बताना चाह रहे हो, तो आपने उसके चार्ज डेंस रीजन को देखना है. आपने देखना है इसमें सिंगल बॉन्ड एक CDR होता है, डबल बॉन्ड भी एक ही CDR होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक CDR होता है, और लोन पेयर, द बॉन्ड पेयर दैट्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, उसको लोन पेयर बोलते हैं. सो दिस इज लोन पेयर, एंड लोन पेयर इज ऑल्सो वन CDR. सो दिस इज बॉन्ड पेयर एंड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड लोन पेयर. ये 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ CDRs हैं. तो पहली चीज़ तो आपने whenever you're looking at molecular geometry, then I have this thing कि उसको CDR को आप देखो. Second thing that you have to look at is this idea that you have to remember that each lone pair reduces bond angle by 2.5 degrees. ओके, सो इफ़ यू हैव अ लोन पेयर तो वो बॉन्ड एंगल को छोटा कर देगा. सो अगर बॉन्ड एंगल 120 है वो 117.5 हो जाएगा. अगर 2 लोन पेयर्स हैं तो वो 2.5 यानी कि 5 से रिड्यूस करेंगे. तो अगर बॉन्ड एंगल 120 है तो वो हो सकता है कि वो 115 पे आ जाए. ऑलराइट, सो नाउ हाउ डू यू डिसाइड द एंगल? सो फॉर एवरी बॉन्ड यू हैव टू लुक एट द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम इन दिस केस आपके सामने बोरोन है. So boron is in the center and fluorine is all around it. So you have to see that boron and fluorine, इनमें boron central atom है. तो identify करें कि boron के पास कितने CDRs हैं. So you can see that boron has 3 CDRs. There is one single bond here, one single bond here, one single bond here. These are 3 CDRs. Okay. So CDRs अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन द सेंट्रल एटम, नॉट ऑन द साइड एटम. फ्लोरीन के CDRs नहीं देखते हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन के पास एक बॉन्ड पेयर है, एक सिंगल बॉन्ड है उसके पास, और 3 लोन पेयर्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. सो लोन पेयर क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. ओके, सो दिस फ्लोरीन इज ऑल्सो द सेम एंड दिस फ्लोरीन इज ऑल्सो द सेम, बट वी आर ओनली गोइंग टू लुक एट the central atom to figure out what they are. Now central atom का ये मतलब नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही central atom होगा. You can have multiple central atoms. Let me give an example. Let's say I have this molecule. Now there are 3 central atoms here. For this part of the molecule, carbon is the central atom. For this middle part of the molecule, this carbon is a central atom. And for the last part of this molecule, this carbon is a central atom. Now for the one in yellow, the one on the left side, iske paas, if you notice, you have 4 CDRs. Okay? So there is 1, 2, 3, 4. Iske saath 4 bonds bane हुए हैं. So it has 4 CDRs. Now if you look at the one that's in the middle, it has 3 CDRs. Because I told you, double bond or triple bond, they all count as 1 CDR. So 1, 2 and 3. This double bond is 1 CDR. Similarly, the one on the right side, it also has 3 CDRs. 1, 2, 3. Okay, so you should be able to identify the CDRs for every central atom. और यहाँ पे उसकी वजह से उसके एंगल सब चेंज होंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन. इफ़ यू हैव 2 CDRs, सो प्लेनर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें आपके पास 2 और 3 CDRs होते हैं. ओके, एंड नॉन प्लेनर में आपके पास उससे ज़्यादा होते हैं.
Okay, sometimes 5 may be planar हो जाता है, but I'm again simplifying it to our level for AS and A levels. हम इसको ज़्यादा advanced structures को नहीं देख रहे. Now if you have two CDRs, so I'll take the example of carbon dioxide for this. So carbon dioxide is this. Always draw the structure, put the lone pairs, and now look at the central atom. The central atom over here is carbon, and it has one CDR on the right, one CDR on the left. And now, if it's a planar molecule, the bond angle will simply be 360 divided by 2. That's 180. Okay. Now, to draw the structure, the shape of the molecule, all you have to do is start at any one end and join all the atoms to make the other ones. So ये एक straight line बन रही है. Because it's a line, we say it's a linear structure. Okay, so the structure is linear and the bond angle is 180. Why is it linear? Because it makes one straight line. I can make one straight line to pass through this whole molecule and I will be able to figure out कि ये क्या है. Alright, so that's how we know. That's how we know what structure we have and what this is all going to be. So all you need to do is connect them all in a straight line, and from that straight line you will be able to figure out कि वो किस तरह से behave कर रहा है. I feel like my iPad is stuck. Just give me a minute. It's definitely stuck. Just a minute. Okay, now let's look at 3 CDRs. 3 CDRs में क्या situation होगी हमारे पास? Let me take the example of BF3, the one that we talked about. So I have B, I have 1, 2, 3, these 3 CDRs. Again, I have 3 CDRs, as you can see, 1, 2, 3. Again, I'm looking at the central atom. If it is 3 CDRs and it's a planar molecule, the bond angle is simply going to be 360 divided by 3, which is 120 degrees. बड़ा आसान है. So 120 degrees. This one was 180 degrees. Now what's the bond, what's the shape going to be? Notice that if I were to join all of this, I will be able to make a triangle. Okay? And in this triangle, this whole molecule will fit in. So we call it triangular, but for some reason British people have these weird terms. So हम इसको बोलते हैं trigonal. Not triangular, but trigonal. You can write triangular, it won't be wrong, but हम इसे triangular या trigonal दोनों बोल सकते हैं. Okay, so that is this shape. This one was a straight line. Okay, so it was a linear structure, एक straight line बन रही है, and that one is trigonal. Okay, so that is the structure that you have. All right, moving on. Now we're moving on to things that are not planar. ठीक है? अच्छा, अब इसको हम देखते हैं. इसी में इमेजिन अगर मैं एक लोन पेयर ले आता हूँ, मतलब ये मेरे पास 3 है ना, इनमें से एक को मैं लोन पेयर कर देता हूँ. लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ SO2. So SO2 has this structure. So SO2, let's look at the CDRs. There is 1 for this double bond. Again, double bond counts as 1, 2, and 3. The lone pair is 3 CDRs. So the angle should be 120. But then lone pair reduces the angle by 2.5. So this angle, the one that we have, this angle will be 120 minus 2.5. Okay. And 117.5. Guys, I'll need a minute. I'm getting an important call.
All right. Yeah. So as I was saying, SO2 has 3 EDRs. You might think कि नहीं इसमें तो 2 bonds हैं, but because of this lone pair, that counts as 1 CDR. So 1, 2, 3 CDRs, 2 single bonds हैं, 2 double bonds हैं और 1 lone pair है. तो angle 120 होना चाहिए. But because of this lone pair, angle reduces by 2.5. So the angle that we will predict is 117.5. Remember, actual में angle हो सकता है ये ना हो, और एग्जाम में भी जब वो आपको ये वैल्यू देगा ना तो हो सकता है वो 117.5 की जगह 118 बोल दे. आपने उससे घबराना नहीं है, बिकॉज हमारी प्रिडिक्शन 117.5 की है, एंड इफ यू राइट दैट एग्जामिनर विल हैव अ रेंज ऑफ आंसर्स, तो वो एक्सेप्ट करेगा. इनफैक्ट समटाइम्स दे टेक 120 इवन, कि अगर आप 120 लिख देते हो तो भी वो उसको समटाइम्स एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो उससे परेशान नहीं होना है. बट आवर प्रिडिक्शन इज दैट लोन पेयर की वजह से 2.5 कम होएगी. एंड नाउ लेट्स लुक एट द शेप. द शेप इज गोइंग टू बी, लोन पेयर जो है वो शेप में नहीं आएगा. So shape is going to be like this. Now this shape has 2 names. It's called bent, or it's also called V-shaped, as you can see. क्योंकि हमारे पास ये V shape बन गई है. So it's called bent or V-shaped, और bond angle आपके सामने. So this is 3 CDRs. Let's move on to 4 CDRs. 4 CDRs का मतलब ये हुआ that it has gone into the 3 dimension now. Okay? So when it goes into the 3 dimension, that gives us 4 CDRs or even more. So 4 CDRs के अंदर हमारे पास सिचुएशन कैसी है? Let's take the example of methane. So methane में हमारे पास I'm going to draw the 3D structure. So जैसे मैंने आपको बताया था that we have solid lines, we have wedge, we have dotted line. Dotted का मतलब है it is behind the screen you're looking at. Wedge means it is outside of the screen आप जिसको देख रहे हो. So let's look at this one. Now this is 4 CDRs. Why? Because 1, 2, 3, 4. 4 bonds on the central atom, 4 CDRs. Okay. Now because of this, this bond angle is going to be, and again remember this value. इसकी geometry ये calculation कहाँ से आई? You don't need to go into that. Non-Euclidean geometry से value आती है. So 109.5 degrees. This is what you have for 4 CDRs. Okay. And let's look at the shape. The shape, I'm going to join all of these. So मेरे पास सबसे पहले तो बेस में बनता है ये एक ट्राइंगल. ओके, सो बेस में तो ये मेरे पास ट्राइंगल बन गया, और उसके बाद दिस वन आई एम गोइंग टू जॉइन. सो दिस इज वन एंड दिस इज अनदर. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ शेप विद 4 साइड्स. 4 साइड्स कैसे हैं? देयर इज दिस साइड एट द बॉटम, देयर इज दिस साइड, देयर इज द साइड बिहाइंड इट, and there's the side in the front. Okay, so 4-sided shape, जैसे tetra pack का pack होता है. So this is why it's called a tetrahedral. Tetra means 4, hedra means side, tetrahedral. Okay, so 4 CDRs, 109.5 tetrahedral structure. Okay, now let's introduce one lone pair here. हम एक CDR की जगह पर lone pair ले आते हैं. एक bond angle को remove करेंगे, उसकी जगह लोन पेयर लेंगे. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अमोनिया. सो अमोनिया हैज अ लोन पेयर एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. हाउ मेनी CDRs? लेट्स सी. इट हैज 1, 2, 3, 4 CDRs. रिमेंबर, बहुत से बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं या भूल जाते हैं कि नहीं ये क्या है, मतलब लोन पेयर है तो उसको क्यों काउंट करें. यू हैव टू रिमेंबर 4 CDRs हैं इसके अंदर. लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दे आर ऑल 1 CDR on their own. What will the bond angle look like? Again, I told you every lone pair reduces the angle by 2.5. So 109.5 minus 2.5. So the bond angle is going to be 107 degrees. Okay. Now let's look at the shape. Again, lone pairs don't come in the shape. So let's look at this. ये मेरे पास एक triangle बन रही है. Okay. And then if I connect it to ammonia, I'm getting a pyramid. ये मेरे पास एक pyramid बन गया जिसकी base एक triangle है. So I'll call it triangular pyramidal or trigonal pyramidal. Okay, trigonal because triangle उसकी base है और pyramidal उसकी shape है. So trigonal pyramidal or triangular pyramidal. Okay, so there you go. That's the shape. Again, lone pairs don't count in the shape. Now let me take 4 CDRs again, but this time मैं एक और बॉन्ड की जगह पे लोन पेयर लेने हैं. सो लेट्स टेक वाटर फॉर दैट.
So water is oxygen that is joined to, so again let me take the wedge, so with hydrogen, another with hydrogen, this side पे एक lone pair, this side पे एक lone pair. So now I still have 4 CDRs, remember, 1, 2, 3 and 4 CDRs, but this one angle is now not 109.5, even though 4 CDRs में 109.5 होना चाहिए, but because of 2 lone pairs it has gone down by 2.5, then again 2.5, so minus 5, that is 104.5 degrees. Okay, so this gives me, again look at the shape, V. So it's a V shaped, or what we also called bent. So again the bond angle is 2.5 reduced because of every lone pair. So दो lone pairs हैं तो दो दफा 2.5 से reduce होएगा, and the shape is going to be bent. So based on this we can easily figure out what the shape is going to be, what the angle is going to be. Alright, let's move on, and this time we are going to talk about 5 EDRs. अब 5 CDRs में जब आप जाते हो ना, so हम उनको split करते हैं, उनमें से 3 एक साइड पे हो जाते हैं, 2 एक साइड पे हो जाते हैं. So let me take the example of PCl5. So phosphorus, 1 chlorine, 2 chlorine, 3 chlorine, and then 1 in the front, 1 at the back. Now the bond angle over here, because of these 5, it's basically splitting it up. अगर आप इसकी shape को देखो, these 3 are in the same plane, so they're made of like kind of like a triangle, as you can see. Okay, and then there's one at the top which is forming this triangle, and one at the bottom that is forming this triangle. So अब नोट करो तो हमारे पास बेस एक ट्राइंगल है, and the top is also a pyramid and the bottom is also a pyramid, and what's happening is that the top and the bottom have a 90 degree angle, but जो हमारे पास ये बीच में ऑलरेडी हैं ये 3 CDRs हैं, right? So it's going to be 120 for those 3 जो एक ही प्लेन में है, and 90 degree जो ऊपर और नीचे. हमने 3-dimensional ज्योग्राफी 3-dimensional ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था मैथ्स में कि कोई भी चीज़ जो सरफेस के ऊपर होती है उसका 90 का एंगल बनता है, and that's what's happening here. So we have these 2 forms of angle. One is 120 because वो एक ही plane में, और दूसरा है 90. And if you look at the shapes, it's 2 pyramids, so we'll call it bipyramidal. And what's the base? Triangle. So trigonal bipyramidal. Okay, so that's that. And now we are moving on to the last of our categories, which is SF6, if we take that example. So SF6 will be sulfur, and it has 6 fluorides with it. So let me say we'll split them up as 4 and 2, 1 at the top, 1 at the bottom, or 4 एक ही plane में. So 2 at the back, two in the front, 1 at the bottom, 1 at the top. Okay, so we have this. Now if you look at this angle, then this is going to be 90 degrees because 360, again I told you, अगर वो same plane में होगा तो 360 divided by 3 or 360 divided by 4 होगा. So these 4 are in the same plane. Okay, so they're all in the same plane, जिसकी वजह से you will have a shape which is 90 degrees over there. But then you also have this at the top. So because of this being at the top, it is going to form a pyramid, as you can see. Okay. Similarly, this one's at the bottom, and this will also form a pyramid जो कि उसके बिल्कुल नीचे होगा, जैसे पेरिस में लूव्र के बाहर है. And now you have what we call a diamond shape, या जिसको हम जब एग्जाम में लिखेंगे we'll call it octahedral. And there you go. Based on this, we have figured out कि हमारे पास shapes कैसी होंगी और हमारे पास उसके angles क्या होंगे. Alright, and that is the idea of VSEPR theory. It's really simple. All you have to do is
आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम और उसके CDRs काउंट करने हैं आपने। 2 CDRs हैं तो 360/2, 3 हैं तो 360/120, 4 हैं तो 109.5, 5 हैं तो 90 and 120 और 6 हैं तो 90 डिग्रीज। इसके ज़्यादा हम नहीं उनको पढ़ेंगे, इसमें और वेरिएशंस हम नहीं उनको पढ़ेंगे, हम इनको सिर्फ इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे। हर मॉलिक्यूल में हर सेंट्रल एटम को आपने अलग-अलग देखना है। तो अगर आप इसकी एग्जांपल लो, दिस इज प्रोपीन, सो इसमें ये सेंट्रल एटम कुछ और एंगल होगा, यहाँ पे 120 का एंगल होगा, यहाँ पे भी 120 का एंगल होगा, बट दिस वन विल हैव 109.5 बिकॉज इसके CDRs और हैं और उसके CDRs और हैं। ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट लोन पेयर्स, single bonds, double bonds, triple bonds, all of them count as CDRs, and the difference is every lone pair reduces the bond angle by 2.5 degrees. All right, so I'll share these notes with you, and yeah, that's it. That's what we needed to study for VSEPR. I hope you understand it. It's a really straightforward, really useful theory. I'll see you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.